My lord, this petition is directed against the order of Planet Member of Board of Revenue. My lord, the under penal excess 27. Brief fact of the case is like that. The late Badri Prasad Soni, who is the husband of the petitioner number 1, Badri Prasad Soni, and the father of petitioner number 2, 3, and 4, purchased the disputed land through registered sale deed. During his lifetime, his brother Manmohan Soni approached before the Tehsildar for mutation of the said land on basis of a dedication deed. On basis of Dedication deed, what is dedication? Samarpan Patra, which was not registered. During the lifetime of the Badri Prasad Soni, on basis of the unregistered Samarpan Patra, by Namantran Panji Annexure P5, and page 22, the Tehsildar has passed the Namantran in favor of the Manmohan Soni. The document which was not registered during समझ गए. then my lord, this Yes, ठीक. this I have understood. Yes. सर ये इसका क्रक्स नहीं बता रहा है ये मुकदमे का. Crux क्या? अब वही तो है सर. अब जब बद्री प्रसाद को मालूम पड़ा, then he preferred the appeal even after seven years. The SDO rejected that, not only discuss the matter, कहा सबकी समर्पण पत्र है इसलिए ठीक दिया है, वो भाई को दिया है, और 7 वर्ष का विलंब भी है इसलिए अपील डिसमिस कर दी. ना केवल डिले के पॉइंट नहीं मैं बता देता हूँ, ऑर्डर पढ़ा देता हूँ. उसके बाद सर हम कमिश्नर साहब के यहाँ गए. कमिश्नर साहब ने पूरी बात को देखा. उन्होंने पाया कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, नामांतरण का कोई नोटिस नहीं है. तो सर ऑर्डर आप पढ़ लें. तो उन्होंने उसको हमारे अलाउ कर दी. इसके बाद ये गए रिवीजन में. बोर्ड रेवेन्यू साहब ने वही ऑर्डर तहसीलदार कंफर्म कर दिया. अब सर इसमें अब क्रक्स से है मैटर का सर. पहले सर आप नामांतरण पहले सर उस पे आ जाए जो डेडिकेशन डीड है, पेज नंबर 20. उसके पहले हमने सर उसके पहले डॉक्यूमेंट जो है वो सेल लीड्स है, एडमिटली वो एडमिट डॉक्यूमेंट है. और उसके बाद जो नाम आ गया था बद्री प्रसाद जी के, वो खतरा लगे हुए हैं. अब जो डेडिकेशन डीड है सर, ये नोटराइज डेडिकेशन डीड है, अनरजिस्टर्ड है. अब एक एप्लीकेशन आती है, कोई नोटिस इशू नहीं किया जाते हैं. बद्री प्रसाद सोनी जी ये लाइव हैं. अब वो कैसे सर तहसीलदार साहब एक लाइव व्यक्ति की प्रॉपर्टी को किस समर्पण पत्र के आधार पर कैसे नामांतरण कर रहे हैं, इन पर क्या प्रोविजंस है, उसको देखे बगैर सर वो नामांतरण पंजी पेज नंबर 22 है. ठीक है, समझ गए. अभी रुक जाइए. यस बताइए. मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि 7 साल बाद इन्होंने अपील फाइल की एसडीओ के यहाँ. एसडीओ ने टाइम बार्ड कह के खारिज कर दी. उसके खिलाफ ये कमिश्नर साहब के यहाँ गए, तो कमिश्नर साहब ने मेरिट पे अपील डिसाइड कर दी, रिमांड बैक किए बगैर एसडीओ, क्योंकि एसडीओ ने मेरिट नहीं छुई थी. जी उसके खिलाफ एसडीओ का ऑर्डर कहाँ है? मैं सर वही पढ़ा देता हूँ सर. ए सर पेज नंबर यहाँ से देखें, पेज नंबर 23 से देखें, और कंक्लूडिंग पेरा है सर. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय नाम के नामांतरण पंजी क्रमांक 10 का सूक्ष्मता से अध्ययन किया. अपीलांट बद्री प्रसाद ने दिनांक, वो सब उस समय लाइव थे, वो खुद कंटेस्ट कर रहे थे, दिनांक 14/9/85 को तथाकथित भूमि के संबंध में एक स्वत समर्पण हक छोड़ना नोटरी के समक्ष 2 गवाहन की उपस्थिति में लेखबद्ध कराया है, जिसमें लेख किया है कि बादगश भूमि पैतृक संपत्ति से प्राप्त की है, इसलिए अपने भाई मनमोहन के पक्ष में छोड़ रहा हूं. इसमें किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं हुआ है. साथ ही दिनांक 5/8/86 को बद्री प्रसाद ने पुनः एक सभा क्या है? एक मिनट रुक जाइए. क्या है मेरिट? मेरिट तो है सर. क्या है ये सर लास्ट पैरा पढ़ें. इतना बता दीजिए, लास्ट पैरा छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि समर्पण पत्र के आधार पर क्या जमीन का म्यूटेशन हो सकता है, उतनी लॉ बता दीजिए बस. कैन अ immovable property having valuation of more than 100 rupees can be transferred on the basis of a relinquishment deed? relinquishment जब होता है, जब joint सत्व होता है, तब relinquishment होता है. I cannot, नहीं तो पूरा का पूरा ये रजिस्ट्री कराने का जो कार्यालय बंद हो जाएगा.
रिलिंक्विशमेंट जॉइंट स्वत्व होने पर एक व्यक्ति दूसरे के हित में छोड़ सकता है। आपकी संपत्ति आप मेरे नाम से रिलिंक्विश नहीं कर सकते। ये इतना लॉ, तो ये रिलिंक्विशमेंट डीड के आधार पर कैसे हो गया ये? सर मेरा छोटा सा निवेदन इस पर ये है कि नीचे की कोर्ट्स ने मेरिट को छुआ नहीं है। अच्छा अच्छा। मेरिट पे कोई ये उपरोक्त आधारों पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उभय पक्ष आपस में सगे भाई हैं। बद्री प्रसाद द्वारा वर्ष 85 में स्वतः समर्पण बेच निष्पादित किया, 95 में नामांतरण किया, फिर लगभग 7 वर्ष पश्चात अपीलांट द्वारा अपील करना कोई सद्भावनापूर्ण नहीं हो सकता। तो इस ऑर्डर को जब इन्होंने कमिश्नर साहब के यहाँ किया तो कमिश्नर साहब को उसको रेमिट बैक करना था कि नहीं, इसके डिले को कंडोन करिए, देन यू कैन पास दी फ्रेश ऑर्डर ऑन मेरिट्स। हम उस ऑर्डर, उन्होंने सीधी अपील अलाउ कर दी। हम जब कमिश्नर रेवेन्यू बोर्ड में गए तो रेवेन्यू बोर्ड ने बड़ा रीजन ऑर्डर किया। क्या कहा? उन्होंने ये कहा, ऑर्डर है सर, एक सेकंड देखिए सक्सेना जी, दिस इज नॉट प्रॉपर। जब वो बहस कर रहे हैं उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको सुनूंगा। ये पैरा 31 है, सॉरी पेज नंबर 31 जी, पढ़िए प्लीज। इस आदेश के विरुद्ध अनविदक पूर्वज मृतक सो 6 वर्ष लिखा है, 7 वर्ष से अधिक उपरांत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि माह मानकर निरस्त किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः अपर आयुक्त के समक्ष सर्वप्रथम यह बिंदु विचारणीय था कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में वैधानिक कार्रवाई की है या नहीं। परंतु अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है उनके द्वारा समय सीमा के बिंदु पर विचार किए बिना सीधे गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है, जो वैधानिक एवं उचित नहीं ठहराया जा सकता। यदि वे यह मानते थे कि एसडीओ के समक्ष प्रस्तुत अपील में हुए विलंब क्षमा करने का पर्याप्त आधार है, तो उसे प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी को गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः इस प्रकरण में यह वैधानिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाए कि वे सर्वप्रथम इस बिंदु पर विचार करें कि क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा के बिंदु पर अनावेदक की अपील को निरस्त करने में वैधानिक कार्रवाई की है या नहीं, तदुपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करें। परिणामतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विवेचना के पर्यवेक्षण में कार्रवाई पर निराकरण हेतु रिमांड बैक कर। ठीक, लिखिए। श्री अनूप सक्सेना, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री प्रदीप कुमार नवेलिया, learned counsel for the respondents. This writ petition under Article 227 of the Constitution is filed, being aggrieved of order dated 15th July 2013, passed by learned member Board of Revenue, Gwalior, in revision case number 1970-TWO2/06, whereby learned member Board of Revenue has remanded the matter back to the Additional Commissioner Sagar Division, Sagar, to decide appeal number 77-A-6/202-203. Next paragraph. Petitioner's contention is that Badri Prasad was owner of land contained in survey number 1090, measuring 0.505, survey number 1990/2183, measuring 0.45 hectare, to the extent of half share, and 0.477। ये सब खसरा नंबर डाल लीजिएगा, ये पेज 27-28 पर है, ठीक है। इतना फुल स्टॉप। He had executed a notarized relinquishment deed in favor of his brother Manmohan, full stop, हाँ please, on the basis of the said relinquishment deed, Tehsildar had carried out mutation in favor of the respondent Manmohan, son of Bhagwan Deen,
full stop. Copy of order of mutation is available on record as पेज 22 uh, पेज 22 वालों हाँ, Annexure P6 full stop. Petitioner's contention is that when Badri Prasad came to know of this fact that fraudulently mutation of his property has been obtained by his brother Manmohan, then he had preferred an appeal before the sub-divisional officer Jatara district Tikamgarh by filing appeal number 80 oblique appeal oblique 01.02 full stop. That appeal was dismissed, treating it to be time barred, and after considering the merits to the extent that it was held by the sub-divisional officer Jatara that there was no justification in filing the appeal after a period of 6 years when Badri Prasad had himself relinquished the property in favor of his brother Manmohan through a notarized relinquishment deed. Full stop. Next para. Against the said order of the sub-divisional officer, Shri Badri Prasad had filed appeal before the additional commissioner Sagar Division Sagar, which came to be registered as appeal number 77 oblique a dash 6 oblique 2002 dash 2003, and in that appeal the additional commissioner had set aside the orders of the Tehsildar and the sub-divisional officer and had directed the Tehsildar Palera to had remanded the matter to Tehsildar Palera to afford an opportunity of hearing to the concerned parties and pass orders on merits. Next para. Petitioner's contention is that being aggrieved of the said order passed by the additional commissioner, Manmohan, who was the beneficiary of the mutation, illegal mutation, approached the Board of Revenue, which set aside the order of the commissioner on a ground that additional commissioner should have remanded the matter to the sub-divisional officer for first condoning the delay and deciding the appeal on merits. Full stop. It is submitted that there could not have been any unregistered relinquishment deed in respect to the property in question. Full stop. It is submitted that no transfer of property could have been effected through a unregistered relinquishment deed, and fraud was perpetuated by Manmohan by taking advantage of trust of his brother Badri Prasad. Next para. Shri Pradeep Naveria in his turn submits that the order of SDO dated 19/9/2002 is not an order on merits, but appeal was dismissed only on the ground of limitation, and therefore the Board of Revenue was justified in remanding the matter to the additional commissioner. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that in the impugned order itself it is mentioned that an application in the impugned order passed by the sub-divisional officer, it is mentioned that an application under Section 5 of the Limitation Act was filed. It was duly supported with an affidavit. Full stop. It is also mentioned that without giving any intimation to the appellant Badri Prasad Soni and without publication of any advertisement in this regard, mutation was carried out by the Tehsildar, and therefore the delay in filing the appeal be condoned, as the appellant Badri Prasad was not having knowledge of the mutation proceedings which were carried behind his back. Full stop. Then the sub-divisional officer discussed merits of the case
in the penultimate paragraphs and mentioned the fact that Badri Prasad had signed the relinquishment deed in favor of Manmohan Singh, mentioning therein that there was no financial transaction involved, and thereafter another affidavit was filed by Badri Prasad in favor of Manmohan Singh for correction in the revenue records when mutation in the name of Manmohan was carried out. Therefore, there was no illegality in the order of the Tehsildar. Full stop. Thus, it is apparent. Next para. Thus, it is apparent that sub-divisional officer had dealt with the aspect of merits of the case and had not dismissed the appeal only on the ground of limitation. Thus, additional commissioner in second appeal was justified in dealing with the matters and finding the order of the Tehsildar to be inappropriate and illegal, remanded the matter to the Tehsildar. Full stop. Against this order, Board of Revenue has failed to apply itself to the fact situation and has arbitrarily and without appreciating the complete order passed by the sub-divisional officer has held that that order was not on merits and therefore additional commissioner should have remanded the matter in favor of remanded the matter to the SDO to decide the case on its own merits. Full stop. This order passed by the member Board of Revenue is cryptic, arbitrary, and contrary to the material available on record, and as has been discussed above. Therefore, order of the Board of Revenue cannot be given seal of approval. Same is hereby quashed. Full stop. It is directed that parties shall appear before the concerned Tehsildar in terms of the order dated 8 September 2006, passed by the Additional Commissioner Sagar Division Sagar, and where Tehsildar will be required to adjudicate whether on the basis of an unregistered relinquishment deed can title of a immovable property be transferred in favor of any third party. Full stop. Parties shall appear before the concerned Tehsildar Palera on 4 July 2023 for which no separate notice will be required, and Tehsildar Palera shall decide the controversy between the parties within further period of 2 months. Hello.